Hi guys, there's a one question which come to mind. What is the minimum score required for this exam? CMAT एग्जाम मिनिमम स्कोर कितना आना चाहिए कि मेरे को एक डिसेंट कॉलेज मिल जाए? ठीक है कि सर मैं अभी क्या बताऊं सर, 300 तो भूल जाओ. देखो भाई, पहले मॉक में स्कोर कम ही आता है, तो प्लीज कीप योर टारगेट एट 300 ओनली. बट द बेयर मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड, उसके नीचे एमबी करने का फायदा ही नहीं है. ठीक है, 200 मार्क्स. सो टारगेट स्कोर इन द सीमैट एग्जाम is 200 marks. In case you want my help in that, you can join our program for books or mocks or crash course for CMAT, CET, other exams. So just call us on any of the numbers given here. So this weekend we're launching our classroom program and online program as well. In case you join, just call or WhatsApp any of the numbers. So target score is 200 marks. उसके नीचे इज्जत नहीं है. कॉलेज एडमिशन सबको मिलेगा, इंडिया में बहुत कॉलेजेस है. There are colleges which will give you admission at even a zero score. जीरो भी क्यों चाहिए भाई, C1 मत दो, डायरेक्टली आ जाओ, डायरेक्ट एडमिशन, डायरेक्ट. बेटा तुम्हारे लिए हमने एक सीट स्पेशल रखा है, स्पेशल सिर्फ तेरे लिए. फोन पे बात करके पता लग गया तू असली एमबीए बनने वाला है, ऐसा बोल के तुम्हें चिपकाया जाएगा. कॉल तो आ ही देंगे ऑलरेडी आपको. फाइन. सो 200 मार्क्स इज द मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड if you want a good college. The next target is 250, then 300. Okay. Now, how to reach that target? Those are scoring 150, 170, 140. Let's look at how to reach that target. So, quant, logic, verbal, innovation, entrepreneurship, and GK. There are 5 sections we have. Each of them 20 question, 80 marks. So, that is we all know that. Your target score in the top 2 sections is 50-50. Yeah. मैंने यहाँ पे क्वांट एंड वर्बल को चूज किया बिकॉज दीज आर माई 2 फेवरेट एरियाज. यू कैन चूज लॉजिक एंड वर्बल, यू कैन चूज इनोवेशन एंड वर्बल. ट्रस्ट मी गाइज, इनोवेशन इज स्कोरिंग. आप जिसने बच्चों ने हमारा मॉक नंबर 1 दिया है, येस वी हैव अपलोडेड द मॉक्स ऑफ द न्यू पेपर पैटर्न, वी आर अपलोडिंग देम एज वेल. ठीक है, सबने बोला कि इनोवेशन इज ईजी, लुक्स स्केरी बिकॉज समथिंग न्यू बट ईजी देन मैथ्स. तो हो सकता है आपका लॉजिक एंड इनोवेशन में 50-50 आ जाए. तो 2 सेक्शन में योर टारगेट स्कोर इज 50-50. या थर्ड सेक्शन 40 एंड 2 सेक्शन में 30-30. दैट्स योर टारगेट स्कोर कार्ड. आई वांट यू टू अपलोड योर स्कोर. सपोज दिस स्टूडेंट जिसका 160 आ रहा है, 160 का ब्रेकअप अकॉर्डिंग टू हिम इज 0-0, 50-50, 60, 50-50 and 0-0. Suppose भाई का स्कोर ये आ रहा है. Now if I compare with this ideal score card, हमें चाहिए था 50 बेस्ट सेक्शन, उसका जो फेवरेट सेक्शन है उसमें 50, भाई का आ रहा है 60, गुड. 50, भाई का आ रहा है 50, गुड. 40, भाई का आ रहा है गुड. He just need improvement in the last 2 sections. So the moment you compare with this, you can easily find out the improvement required as compared to the score required 200. And to get a score of 200, your target attempt is around 65. 15, 15, 15 in the top 3 section, 10, 10 in the last 2 section. ताकि काटा पीटी करके नेगेटिव मार्किंग निकाल के आपका मोटा मोटा 200 मार्क्स पार हो जाए. ठीक है, आई विल अटेम्प्ट 65, 200. And I wanted to break it up in timer as well. So quant verbal 50 minutes, quant logic verbal 45 minutes, innovation 20 minutes is more than sufficient, GK 15 minutes is more than sufficient. That's the ideal breakup of 120 minutes. Now 200 marks पे क्या मिलेगा? Yeah, see, percentile and scores changes every year. mba.com, CMATking.com/CMAT. If I go to that link, CMATking.com/CMAT. Fine. So here I can find the colleges which I can get at 200. Now first of all I need to see 200 marks है कितना, नीचे आके पता लगेगा. Now this is the average of last 3 years. 200 marks is 70 percentile. Okay. The moment I cross 200 marks, I'll get a decent college. And decent college कौन सा मिलेगा, ये सारा मैंने आपको लिस्ट दे दिया है. 70 percentile वाले सारे colleges are available for you. Fine. गीताम, विशाखापट्टनम, आचार्य, विवेकानंद कॉलेज, दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस, RSB. Fine, that's your minimum target, minimum. Okay, 70 percentile.
फाइन, हम ऑब्वियसली आई एम नॉट थिंकिंग हम 70 60 200 मार्क पे आके अटक जाएंगे. पहला टारगेट, दिस इज योर फर्स्ट टारगेट, प्लीज रिमेंबर दैट, फर्स्ट टारगेट. ओके, इसके ऊपर स्कोर करना है हमको. सो द मोमेंट यू क्रॉस 200 वी विल सेट द नेक्स्ट टारगेट एज 250. सो 200 इज नॉट योर एंड ऑफ द गेम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. 200 इज द बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड. ठीक है, अब मैं आपको कौन से कॉलेज आपको मिलेंगे मैं आपको दिखा दी. ऑब्वियसली वी नॉट हैप्पी विद दैट, वी वांट टू टारगेट अ गुड कॉलेज, बेटर कॉलेज. ठीक है जी, उसके लिए माय नेक्स्ट टारगेट बिकम 250. उसके बारे में आई विल टॉक इन नेक्स्ट वीडियो. ऑलराइट, so I'm traveling to all these locations. So in case you are based in Pune, so I'm in Pune on Saturday, Sunday I'm in Dadar, Borivali, Thane, and Monday is online. So in case you want to attend the workshop, please do call or WhatsApp any of the number given here. All the best.